Aga Khan Economic Planning Board for USA is pleased to present a video guide to help you complete the Paycheck Protection Program Loan Forgiveness Application Form as issued by SBA on May 15, 2020. We would like to begin with an important disclaimer. This video is not an official guide from SBA, US Treasury, or any lending institution. This is a community service video to assist the audience prepare their PPP loan forgiveness application. All guidance provided in this video is based on the Form 3508 and accompanying instructions issued by SBA on May 15, 2020. It is expected that SBA and U.S. Treasury may issue further guidance and clarifications regarding this application after May 15, 2020. You are strongly advised to consult your professional advisor to help you complete this form and to make sure that you check the most current guidance and clarification issued by SBA and U.S. Treasury at the time of filing this application with your lender or bank. Before we start reviewing the process and the application form for requesting forgiveness, we would like to make a very strong recommendation. It is a recommendation, it is not a requirement of SBA, that you keep the PPP funds in a separate bank account and don't mingle PPP funds with any other funds in your business. This is going to help you in many different ways because the banks will be asking for bank statements and there will be a requirement to certify that you have not used the funds for any other purposes. So it is very, very important that you try your best to keep it in a separate bank account so that there is no mingling of funds from other things. So अगर आपके पास में ये possibility हो तो ये बहुत important है कि आप try करें कि एक separate bank account के अंदर में PPP के funds को रखें ताकि किसी और funds के साथ में वो mix ना हो. फिर ये this is very important that you make sure that the funds are only used for the purpose that they are allowed. Now, if you have it in a combined bank account, then it will become sometimes difficult to certify that those funds were not used only for the allowed purposes because you may have other bills coming into that account and PPP funds are sitting there. That could become difficult. So it is important that you keep it, if possible, keep it in a separate bank account and then make sure that from that bank account you only pay the expenses that are allowed, which includes the payroll, the contribution, employer contribution for health insurance, retirement plans, state and local taxes paid by the employer, and you can pay the rent from it, you can pay utilities, and you can pay the mortgage interest, not the principal, only the interest. So if you be careful that way, this will make your certification process for forgiveness much easier compared to if you keep it mingled into one account. SBA has issued a Form 3508 to apply for Paycheck Protection Program loan forgiveness for all borrowers, and this form is what we will now review. This form has all the important sections that we need to cover today. तो अब हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है. We start with the business legal name. You enter the name of your business over here. Then you put in a DBA. अगर आपका कोई DBA है business का तो you can enter it here. Then you put in the address in the next line. Put in the street address. The next line you can put in the city and the state, and then you put in the EIN number of the business. आपका जो employer identification number है company का वो आप enter कर दें यहाँ पर. Next box is the phone number. इसके बाद में primary contact का नाम जो भी manager या president है उसका नाम रखें, and then you put in the email address of the that person. अब इसके अंदर में अगर आपका business
एक सोल प्रोप्राइटरशिप है. इफ़ यू आर रनिंग द बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर या आपने अपने 1099 के बेसिस पर पीपीपी लोन अप्लाई किया था, तो ये बिजनेस लीगल नेम के बॉक्स के अंदर में इंस्टेड ऑफ द कंपनी नेम यू विल पुट इन योर पर्सनल नेम. और उस केस में आप दूसरा बॉक्स जो आपको चेंज करना है, वो जो EIN नंबर का बॉक्स है, उसके अंदर में इंस्टेड ऑफ द EIN नंबर you will put in your social security number. So in this case, right now for our example, we will stay with the example of LLC that we used, but if you have your personal name, then you have to take care of it accordingly in this form. We will now go on to the question that we have to answer about the PPP loan SBA loan number. जब आपको लोन मिला था उस वक्त आपके लोन डॉक्यूमेंट में आपको नज़र आएगा कि एक SBA का लोन नंबर है जो बैंक को SBA की तरफ से मिला था. वो नंबर आप अपने डॉक्यूमेंट से निकाल कर इसके अंदर डाल दें. इसके बाद में अगर बैंक का ख़ुद का कोई लोन नंबर है तो वो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. एंड देन you have to write in the loan amount. आपको कितनी अमाउंट की लोन मिली है वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर दें. and then the date on which the money was put into your bank account, the day of disbursement. जब आपने लोन लिया था उस वक्त आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, एम्प्लॉयज़ एट टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन. नेक्स्ट यू हैव टू पुट इन the number of employees right now when you are applying for forgiveness. जब भी आप ये एप्लीकेशन डालें उस वक्त आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो नंबर आपको डालना है. बहुत सारी कंपनीज़ ने EIDL के लिए अप्लाई किया था. EIDL इज़ अ लोन फ्रॉम SBA, इकोनॉमिक इंजरी डिज़ास्टर लोन. और जिन कंपनीज़ ने, जिन बिजनेसेस ने इसके लिए अप्लाई किया उनको $1,000 पर एम्प्लॉई के हिसाब से एडवांस भी रिसीव हुआ है. अगर आपको ये एडवांस रिसीव हुआ है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है. सो इन दिस कंपनी probably $10,000 came in because they have 15 employees. और अगर ये एडवांस आया है तो इसका एक लोन एप्लीकेशन नंबर भी होगा और वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है आपके ईमेल से चेक करके कि SBA ने आपको क्या नंबर इशू किया हुआ है. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पेरोल स्केड्यूल बताना है कि आपकी कंपनी के अंदर में आप पेरोल किस फ्रीक्वेंसी से देते हैं. हर कंपनी में एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है. अगर आपके पास में वीकली पेरोल है तो आप वीकली में मार्क करें, बाई वीकली है तो बाई वीकली मार्क करें, अगर ट्वाइस अ मंथ है तो ट्वाइस अ मंथ मार्क करें और अगर मंथली है तो मंथली पे मार्क करें. अगर कोई ऑड सीक्वेंस है आपका, something different than any of these, then you can mark it in other. But in our example, we will continue with twice a month in this application, and then we'll go on to the next question, which is a question that requires some clarification. यहाँ पर एक इन्होंने question डाला है covered period या alternative payroll covered period, और इसको हम 2 मिनट के लिए understand करते हैं before we answer this question. PPP लोन के लिए एक कवर्ड पीरियड पहले से डिफाइन था जो लोन डिसबर्समेंट डेट से 8 वीक्स का पीरियड था, लेकिन अब इन्होंने एक अल्टरनेटिव कवर्ड पीरियड का ऑप्शन दिया है. तो हम उसका डेफिनेशन कवर कर लेते हैं. पहले ये कि व्हाट इज़ कवर्ड पीरियड. द कवर्ड पीरियड कवर्स 8 वीक्स. इट स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डिसबर्समेंट, द डे यू गॉट द फंड्स इन योर अकाउंट, and the last day is the 56th day, which is 8 weeks from the date of disbursement. For example, if you received the loan on April 20th, then the first day was April 20th and the last day was June 14th. अब alternative covered period क्या है? This option is only available for those companies who have pay periods which are bi-weekly, यानी कि हर 2 हफ्ते पे पेरोल दे रहे हैं या उससे ज़्यादा जल्दी दे रहे हैं, लाइक 1 वीक पे दे रहे हैं. तो उन कंपनीज़ के लिए ये ऑप्शन दिया है. ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो यू कैन मेक द फर्स्ट डे ऑफ द कवर्ड पीरियड द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट पे पीरियड आफ्टर द लोन इज़ डिस्बर्स्ड. और उस हिसाब से आपका 8 वीक्स का पीरियड उस दिन से लेकर 8 वीक्स का पीरियड होगा, यानी इट विल बी अ लिटिल लॉन्गर or later than it would have been. So example देखते हैं कि suppose कि आपको लोन April 20th को मिली, लेकिन आपका पे पीरियड स्टार्ट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए April 26 को,
your next pay period starts on April 26th. So then you can choose to make April 26th the first day of the covered period. And in that case, your last day will be June 20th. This way, you will have an option to change your 8 weeks period based on your pay period. Now, here, this option may not be necessary. ये शायद आपके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन you can do the calculation to see if there is any advantage in doing that. But in general, this may not be a very important option selection process, because as we will learn in a little while, that the opportunity for us to include all the cost in the pay period is very good, and we may be able to do it well with the covered period. However, make sure you do that calculation to see if you need to choose the alternative covered period. With the information now we have understood about the covered period and the alternative covered period, we will use this information to enter the date here. हमने डाला कि covered period is the day on which we got the loan, and then it goes up to June 14, 2020. Again, if there is a need for you to use the alternative payroll cover period, if it is favorable for you, make sure you check it out, and if so, then you will enter the information in this line instead of the covered period. But for our example, we will stay with the covered period example for now, so that we can proceed with the next question on this form. And the next thing that we want to highlight is there is a question which says, if you received more than $2 million in PPP loan, then you have to put a check mark here. Please note that it says together with affiliates if applicable, which means that you have to take into account all your other affiliated businesses, but get clarification on this before you put a check mark. There are some rules on it. Make sure you understand it and put a mark if your loan is in excess of $2 million combined together with all your affiliates. So if that is the case, then you put a check mark here, and then next we will go on to calculate the forgiveness amount, which we will do in the next part of the form. Before we move on to the next part of this application, which is the second half of the page, we want to clarify that SBA has determined that full-time equivalent will be 40 hours per week. तो आपके लिए जब आप एम्प्लॉई की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन करेंगे, तो every employee who works 40 hours per week or more is considered one full-time equivalent employee. अगर आपके पास में एम्प्लॉयज़ लेस देन 40 आवर्स काम करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसका कैलकुलेशन करें कि कितना परसेंटेज ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट है, या you can make it half. So if anybody works 10 hours a week, 20 hours a week, you can consider that employee as full-time equivalent, half of the full-time equivalent employee. So let's look at some assumptions we would like to make. हम पहला assumption ये सोचते हैं कि या तो आपने from January 1st, 2020 से लेके the end of the covered period, और जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया, the covered period is June 20th, 2020 in the example we are doing, and it could be different for every applicant. It depends on the date of the disbursement of the fund. जिस दिन आपको लोन मिला है उस दिन से 8 weeks का end. अगर उस वक्त तक आपने किसी भी एम्प्लॉई को ले ऑफ नहीं किया और किसी के आवर्स कम नहीं किए, तो आपका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है. अगर ऐसा हुआ है, एंड लेट्स से कि आपने February 15 से लेके April 26 तक पीपल को ले ऑफ किया है, रिड्यूस किया है. इफ़ यू लेड ऑफ पीपल बिटवीन February 15th and April 26th, एंड देन यू रिस्टोर्ड योर फुल टाइम इक्विवेलेंट लेवल्स, अगर आप वापस लोगों को आपने हायर कर लिया है बाय June 30th, 2020, दो उस केस में भी आपके लिए ये एप्लीकेशन अप्लाई होता है, सिंपल है. फॉर एग्जांपल कि आपके पास में ऑन February 15, 2020 आपके पास 10 एम्प्लॉई थे, ऑन April 26, 2020 आपके पास सिर्फ 8 एम्प्लॉयज़ रह गए थे. आपने June 30th, 2020 को दोबारा यू ब्रॉट योर एम्प्लॉयमेंट बैक टू 10. अगर ये सिचुएशन नहीं है, तो नेक्स्ट इज़ कि आपके पास में रिडक्शन किया था और फिर आपने उन एम्प्लॉयज़ को रिटर्न ऑफर भेजा टू कम बैक टू जॉइन यू.
and they rejected the offer. या आपने एम्प्लॉयज़ को फॉर रीज़न फायर किया हो, फॉर डिसिप्लिनरी रीजंस, फॉर परफॉर्मेंस रीजंस, आपने फॉर कॉज एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, या एम्प्लॉयज़ ने वॉलंटरीली रिज़ाइन किया या रिक्वेस्ट किया कि आवर्स को रिड्यूस किए जाएं. इन सब केसेस में या तो आपने रिड्यूस नहीं किया एम्प्लॉई, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है, या आपने रिड्यूस किया और आपने कैचअप कर लिया बाय जून 30 आपने दोबारा हायर कर लिया, या आपके पास शॉर्टेज है लेकिन आपने उनको ऑफर दिया और वो दोबारा रिटर्न नहीं हुए, दे डिडंट कम बैक टू वर्क, और यू हैड टू फायर एम्प्लॉयज़ फॉर कॉज, और योर एम्प्लॉयज़ रिजाइंड और रिक्वेस्टेड अ रिडक्शन इन आवर्स. फाइनली आपने कोई भी एम्प्लॉई की, किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी रिडक्शन 25% से ज़्यादा नहीं की है. अगर आपके पास में ये सारी कंडीशन है, विच इज़ व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉ वाज, दैट द लॉ वांटेड द एम्प्लॉयर्स टू कीप द एम्प्लॉयज़ on the job and to maintain their salaries. If you have done that, then we will see that your application will be quite simple. अब हम फॉर्म 3508 के सेकंड हाफ पे आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन होगा. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम फॉरगिवनेस अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे और पहली लाइन जो है वो पेरोल कॉस्ट की है. पेरोल कॉस्ट के अंदर में इसमें लिखा हुआ है कि एंटर द अमाउंट फ्रॉम पीपीपी स्केड्यूल ए लाइन 10, विच of course makes it obvious that there is a schedule A, एक separate form है schedule A जो हमें भरना होगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्या अमाउंट लिखेंगे. तो आइए हम schedule A को देखते हैं PPP के, और उसमें आप देखेंगे कि लाइन 10 ये नीचे में एकदम लास्ट लाइन है कि जहाँ से ये नंबर हम PPP के फॉरगिवनेस के अमाउंट की लाइन के अंदर में नंबर लेकर जाएंगे. तो इस स्केड्यूल के अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी है और हम उसको रिव्यू करते हैं. तो पहली लाइन जो है वो हमारे पास में एक कैश कॉम्पनसेशन की लाइन है. व्हेन इट सेज कैश कॉम्पनसेशन, इट मींस कि जो हमने एम्प्लॉयज़ को पेरोल दिया है, जो कॉम्पनसेशन पे किया है, it is of course paid through bank accounts. It is just called cash compensation, but this is what we will be doing here, is we will calculate the cash compensation. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक टेबल की तरफ इशारा है. We are being asked to complete a table, which is a worksheet behind the table here. So आइए देखते हैं कि पीपीपी स्केड्यूल ए की वर्कशीट के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है. ये वर्कशीट जो है वो सिर्फ आपकी वर्किंग के लिए है. यू डू नॉट हैव टू सबमिट दिस टू द बैंक, बट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्कशीट दैट यू शुड हैव इट रेडी. वी डोंट नो इफ सम बैंक्स में आस्क फॉर दैट वर्कशीट. सो हम देखते हैं कि इसके अंदर में पहली चीज़ इसके अंदर में है कि टेबल 1. Table 1 is for listing the employees who are of course working in United States, और उसके बाद में ये वो एम्प्लॉयज़ हैं कि जिनका 2019 के अंदर में, जब आपने एप्लीकेशन भरे थे तो 2019 की डेटा डाला था, तो 2019 के अंदर में इनके compensation, annual compensation was less than or equal to $100,000. सो इन लोगों की लिस्टिंग आपको यहाँ पर करनी है. तो हम इसके अंदर में इसके एम्प्लॉयज़ के नाम डालते हैं. पहला एम्प्लॉई का हमने नाम डाला, उसकी आईडी डाल दी, उसके बाद में उसका कॉम्पनसेशन डाल दिया. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स ऑन दैट फॉर्म, आई वांटेड टू क्लैरिफाई एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो आया है, वो है पेरोल कॉस्ट का. पेरोल कॉस्ट के अंदर में बहुत कंसर्न था कि इस पीरियड के अंदर में जो पेरोल पे होगा वो कैसे कवर होगा. तो डेफिनेशन के अंदर में एक इंटरेस्टिंग एडिशन है, और वो ये है कि पेड एंड इनकर्ड ड्यूरिंग द 8-week पीरियड. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है विच गिव्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर कंपनीज टू मेक श्योर that they are able to reach the 75% requirement by using this opportunity. So इसके अंदर में पहला पार्ट है कि all compensation paid during the covered period. Now it doesn't mean that that compensation is necessarily
for that 8-week period. It could be a compensation for a prior period, but अगर payment इस 8-week period में हुआ है तो वो count होगा, plus compensation incurred during the covered period, even if paid after the covered period, but must be paid by the next paid date. This is an important addition that has come, which is a clarification, which means कि आपके पेरोल पीरियड के अंदर में हम एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज कि आप एवरी 15th एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ आपका पेरोल होता है और आपको लोन अप्रैल 20th को मिला है. द 8 weeks एंड ऑन जून 14th. ये आपका 8 week का पीरियड है. आपका फर्स्ट पेरोल अप्रैल 30th को था, which is for the period April 16 to April 30th. So even though इसके अंदर इस पीरियड के अंदर में 4 दिन ऐसे हैं कि जो आपके लोन से पहले का पीरियड है, लेकिन क्योंकि पे पीरियड इज इन द 8 weeks period, the whole payroll will count towards the payroll forgiving. The second payroll is on May 15th, which is also in the pay period, and it is all good. It covers the pay period within the 8 weeks, and it is paid within the 8 weeks. The next pay period is on May 31st, and it's for May 16 to May 31st. That also falls very clearly inside the 8-week period. So that is good. But the fourth payroll period is very interesting. आपका fourth payroll जो है वो June 15th को होता है, लेकिन आपके 8 weeks जो है वो end हो गए June 14th को. So according to the clarification provided, it says that June 1st से लेके June 14th तक का payroll, 14 days का payroll you can include in the calculation when you put in the compensation in that form, even if the payment is after June 14th, but it must be paid at the next pay date. So if it is paid on June 15th, which is after the end of your 8-week period, you can still include 14 days of payroll in the calculation of the cash compensation of the employees. So as we learned, this $6,000 cash compensation that we have entered for this employee is not necessarily what was paid to him. ये ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट इस एम्प्लॉई को पे हुआ था. इसमें शायद थोड़ा सा अमाउंट ये भी हो सकता है कि जो आखिरी फ्यू डेज हैं जिसकी पेमेंट उसको आफ्टर द कवर्ड पीरियड, आफ्टर द 8-week periods end, then he will be paid, but you can include it in here in this box. इसके बाद में हमको फुल टाइम इक्विवेलेंट का नंबर डालना है. If this employee is a full-time employee, works 40 hours or more per week, then you just put in 1.0 in here. And then the next thing we have to enter is we are assuming that you have not reduced anybody's wages or salaries more than 25%. If that is the case, which is what we are assuming here, इस वक्त हम यही सोच कर चल रहे हैं कि आपने किसी की भी सैलरी या आवरली रेट को 25% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया है, और अगर किया भी है तो आपने दोबारा उसको रिटेन कर दिया है, और इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं. अभी जो हमने सैलरी और आवरली वेज रिडक्शन की बात की, उसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि द कंपैरिजन of the hourly rate or the salary is not to 2019 but to January 1st, 2020 and March 31st, 2020 period. So it is a 3 months period from January 1st, 2020 to March 31st, 2020. अगर आपने उस पीरियड के कंपैरिजन में आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज या आवरली रेट को कवर्ड पीरियड में कम नहीं किया है, then you are okay, meaning covered reduced more than 25%. और दूसरा है कि अगर आपने reduce किया भी है तो you have time, you have chance to restore that salary or hourly wage of the employee to the level of February 15, 2020. जो February 15, 2020 को उस एम्प्लॉई की आवरली रेट या सैलरी थी, आप अगर उस लेवल पे दोबारा ले आते हैं before June 30th, 2020, then you will not have any penalty for reduction of salaries or hourly rates.
सो हम दोबारा इस वर्कशीट पर देखते हैं कि हमने अस्यूम किया कि हमने कोई भी एम्प्लॉई की, किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी में 25% से ज़्यादा रिडक्शन नहीं की है, या तो अगर रिडक्शन हुई है तो हमने वी हैव रिस्टोर्ड इट, हमने दोबारा उसको February 15, 2020 के लेवल पर हम जून 30 से पहले पहले उसको लेकर आ गए हैं। इस वजह से हमने इस एम्प्लॉई के बॉक्स के अंदर में ज़ीरो लिखा है। और इसी तरह से हम दूसरे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं इसके अंदर में, और हम देखते हैं कि इस तरह से हमें लिस्टिंग करनी है। अगर आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो आपको एक सेपरेट वर्कशीट बनाकर इसको प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास में कोई एम्प्लॉई पार्ट टाइम है, फॉर एग्जांपल दिस एम्प्लॉई इज़ अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई, और इस एम्प्लॉई की सैलरी $2000 फॉर द 8 वीक्स पीरियड थी, तो इसको हम 0.5 करके डालेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में इसी तरह से अगर हमारे पास एक और एम्प्लॉई है कि जो पार्ट टाइम है, उसको भी हमने 0.5 कर दिया। अब हम इस कॉलम का टोटल करेंगे, 28,000 इधर का टोटल है, और यहाँ पर हमारे पास में टोटल आ गया 4.0, और बॉक्स 3 हमारा जो है वो ज़ीरो रहेगा। अब हम टेबल 2 पर जाते हैं। टेबल 2 के अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें उन एम्प्लॉयज़ के नाम डालने हैं कि जिनकी सैलरी और इनकम 2019 में 100,000 या से ज़्यादा थी। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कॉम्पनसेशन 100,000 से ज़्यादा थी 2019 में। हमें उनके नाम यहाँ पर डालने हैं, और उनके नाम हम डाल के उनकी डिटेल्स डालेंगे, उनके कॉम्पनसेशन को हम डालेंगे, एंड मेक श्योर करें कि उनका 15,385 से ज़्यादा का अमाउंट हम नहीं डाल सकते। दैट इज़ द मैक्सिमम। अगर उनकी सैलरी अभी भी 100,000 या ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम 15,385 इधर डाल सकते हैं। इनका भी फुल टाइम इक्विवेलेंट 1.0 होगा, और ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर टोटल करके एंड देन वी विल पुट इट इनटू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर भी हमारा फुल टाइम इक्विवेलेंट 1.0 चलेगा। With that information done and ready with us, हमारे पास में अब वो information आ गई है, तो हम इसके अंदर में we can start putting in the information from the table 1 as we just calculated. हम यहाँ पर $28,000 that we calculated for the payroll from table 1 in a little while ago, and then we will do more input here for other lines in the form. As we can see in this form, the worksheet, we had filled out and we got the full-time equivalent, जो हमने देखा था कि हमारे पास में 4.0 है और हमारे पास में salary wage reduction का 0 है. This is the information we also have to transfer to our form Schedule A. So we will take that information and enter it here in this line where we have to put in the 4.0 number, which is the full-time equivalent that we have. And then the next thing is the next line, which you'll see that it says that if you have not reduced anybody's hours or wages in the covered period compared to January 1st, 2020 to March 31st, 2020, then you can just put a check mark here and put a 0 over here. And that way we have taken care of this information that we need to enter here. Now we will look at the Schedule A worksheet again to pick up another information from here. This is Table 2. These are the employees whose income was more than $100,000 in 2019. ये वो वाले लोग हैं जिनकी income 2019 में 100,000 से ज़्यादा थी. हम इसका सिर्फ 15,385 लेंगे और ये information प्लस जो हमारी एवरेज फुल टाइम इक्विवेलेंट का जो नंबर है 1.0, ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ से कॉपी करनी है और लेना है अगले फॉर्म के अंदर में, जहाँ पर हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे टेबल 2 की, जो 15,385 यहाँ पर आएगा. इसके बाद में हम नेक्स्ट थिंग जो है वो यहाँ पर 1.0 लिख देंगे. तो इस तरह से हमने हमारी वर्कशीट में से इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ पर मूव कर दी है. अब जो है वो हम आगे जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो
पर्टिकुलरली यहाँ पर हमको सोचना है कि एक तो ये कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है, देन दैट नंबर विल कम हियर. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ग्रुप पॉलिसी है और कंपनी की तरफ से कोई अमाउंट पे होता है, हमने हमारे एग्जांपल के अंदर में $785 फॉर एग्जांपल कंपनी ने पे किया for the employees, then that amount is here, not the amount that the employees paid. This is the employer paid amount. Then we will also put in the next line any amount paid towards the retirement plan. So अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई retirement plan है और आपने कोई contribution किया है employees के लिए जो employer के तरफ से हुआ है, तो that amount will go here. And then the last line, which is line 8, is we will put in any state unemployment taxes that you may have paid for the employees. Now, these are taxes that the employer paid, not what the employee paid. So, अगर आपके स्टेट के अंदर में employee income tax है और अगर employee पे करते हैं तो वो यहाँ पर आपको नहीं काउंट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ग्रॉस वेजेस के अंदर काउंट कर लिया है. तो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर का पार्ट जो है वो हमको एंटर करना है. और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयर जो है खुद जो ओनर है उसकी सैलरी यहाँ पर डालने के लिए उन्होंने एक सेपरेट लाइन दी है. तो अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन डाली वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ की थी. कहीं पर भी इट सेज हियर, यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो ओनर एम्प्लॉयज़ हैं, और ये लाइन उनके लिए भी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिन्होंने 1099 और स्केड्यूल सी के बेस पे पीपीपी का लोन लिया था, ये उनके लिए भी ये लाइन है. लेकिन जो ओनर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉम्पनसेशन को यहाँ पर एंटर करना है. अब ये कैलकुलेशन के अंदर में इसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये नंबर जो है वो किसी किस्म की एनालिसिस में आए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओनर एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के ओनर्स हैं उनकी कॉम्पनसेशन को यहाँ पे ऐड करने बोला है और कहा है कि वो टेबल 1 या टेबल 2 में नहीं होने चाहिए, उनके नंबर्स अबव नहीं होने चाहिए, वो सेपरेटली दिखाने हैं. हो सकता है कि ये किसी किस्म की एनालिसिस के अंदर यूज़ हो, किसी किस्म की असेसमेंट के लिए, अप्रूवल वगैरह के लिए कहीं पर यूज़ होने लगें, तो ये इंफॉर्मेशन एक सेपरेटली हमें एंटर करनी है. और ये सब डालने के बाद में हम फाइनली लाइन 10 पर आ गए, जहाँ पर हम लाइन 1, 4, 6, 7, 8 और 9 जो हमने पहले देखा था उन सब लाइंस का टोटल करके यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे. और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर में हमें टोटल अमाउंट मिल गया जो पेरोल कॉस्ट का 52,534 है. With our Schedule A completed, which was an important schedule to complete in order to enter the number, the amount for line 1 on this forgiveness amount calculation application form. So we got that calculation done, and so we are now ready to enter an amount here, which we just calculated a couple of minutes ago, and that is 52,534. That will come as payroll costs. This is the time now when we will enter the other expenses. So if you remember, the PPP program allows that 75% or more should be put to payroll, and the rest of it, 25% or less, can be put to mortgage interest, rent, and utilities. So we can enter that number over here now. So line 2 on this calculation section is the interest payment. तो अगर आपके पास में interest की payment है, please remember this is only interest, don't put principal in there. So interest payment अगर आपके पास कोई है तो you should put it here, and we are using an example. And if you have mortgage, then probably you don't have rent expense, so we will not put anything in line 3 for rent, and we will go to utility payments. And in utility payments we will put in the amount of utility payments we made during this period. Now we will go into some details about that in a little while, but these are some of the amounts that we have to put in now, and then we will go on to the next section. This is where we are putting in any reduction. So if you remember that we
had said that we have not done any reduction. हमने किसी भी employees की hourly rate को reduce नहीं किया more than 25% या उनकी salary को reduce नहीं किया, और अगर किया भी तो we have restored it, हमने उसको before June 30th दोबारा उस level पर लेकर आए कि जो उनका पुराना लेवल था ऑन February 15th. सो क्योंकि हमने वो कर दिया है तो यहाँ पर हम ज़ीरो एंटर करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या आ रहा है. तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो लाइन 6 के अंदर लाइन 1, 2, 3 एंड 4 और उसमें से लाइन 5 जो कि हमारा ज़ीरो है हम डालेंगे तो हमारा टोटल बनता है 55,014. ये हमारा लाइन 6 का टोटल हो गया है. और अब हमारे पास में एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन हम करेंगे जिससे हम फाइनली फॉरगिवनेस के अमाउंट की तरफ पहुंचेंगे. अब हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू डू सम एडिशनल calculation for full-time equivalent. लेकिन before that, we want to talk about that we just calculated the total payroll cost, 52,534, a few minutes ago, and this is on Schedule A. And now we're going to see that how do we calculate the full-time equivalence reduction or comparison. So in our case, what it's saying is if you have not reduced the number of employees or the average paid hours of your employees between January 1st, 2020 and the end of the covered period, which means कि अगर हमने January 1st, 2020 से लेकर end of the covered period, which is in our case, it could be June 20th, it could be another date for you, whenever it is, if you have not made any reduction in the number of employees, then you are good. You can put a check mark here, and all you do is enter a 1.0 in line 13. That makes it very easy. Your calculation becomes easy. You don't have to worry about matching your FTE or full-time equivalent to a previous period in the previous year or in the beginning of this year. So with that, now we want to enter some information, but I just want to mention this line 11. ये line 11 के अंदर में average full-time equivalent during the borrower's chosen reference period. The reference period, if you remember, is the previous year, is February to June 30th, 2019 or beginning of 2020. But in our case, because we have a safe harbor number of 1.0, line 11 doesn't matter. That number doesn't matter, but still we have to put it in if the bank insists that they want to see a number there. So, just be ready that have the number calculated from your previous period, but because of the safe harbor, which is, I mentioned the safe harbor in the beginning, that first is you didn't reduce, but if you did reduce, you recovered, you restored it by June 30th. If you met all of those requirements, you offered the job to your employees, they didn't come back, you had to lay off somebody you had to fire somebody because of discipline reasons, or some employees resigned, all of those covered, you are under safe harbor. Just keep good records. आपको कुछ भी submit नहीं करना है बैंक को, as long as you have those requirements met, you have the documentation. If they ask for it, you should have it. You don't have to submit with your application. With that, then all you do is in line 12, enter the number that we calculated a few minutes ago. That would be your 5.0 full-time equivalent, line 2 and 5 that we had in the application before. With that, we are ready to enter some of the information back onto our application. Now we are back onto our main application page where we are calculating the forgiveness amount. If you remember, we just did a calculation on Schedule A. On line 13, we put 1.0. That's a very important number. That determines how much of our loan will be forgiven. 1.0 is almost like saying 100%. It is the same thing. So if we have 1.0 in this line, which we copied from Schedule A, then all of our amount will be forgiven because that is the quotient that is being used. इस multiplication से हमारी forgiveness amount का calculation होता है. तो अब हमारे पास में line 8 के अंदर में वो amount आ गया कि जिसके लिए हम qualify होते हैं forgiving के लिए.
लाइन 9 के अंदर में हमारी लोन का एक्चुअल अमाउंट हम डालेंगे जो 53,499 है। ज़ाहिर है कि अगर हमारी लोन का अमाउंट 53,499 है और हमने खर्च किया है 55,014, तो हमारा फॉरगिविंग का अमाउंट जो है वो लोन का अमाउंट होगा। लेकिन लाइन 10 के अंदर एक टेस्ट हो रहा है और वो टेस्ट ये है कि मेक श्योर हो रहा है कि हमने 70% और मोर 75% और मोर हमने जो है वो पेरोल के ऊपर स्पेंड किया है, और वो टेस्टिंग जो है वो इस मल्टीप्लिकेशन से हो जाती है कि हमारा जो 52,000 का अमाउंट है वो गुड है। ये तीन नंबर्स हमने डाल दिए। लाइन 10 की कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। इट इज़ यू हैव टू डिवाइड 52,534 बाय 0.75, तब जाके ये नंबर आता है। डोंट गेट वरीड व्हाई दिस नंबर इज देयर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, बट दैट्स ऑल द कैलकुलेशन इज। नाउ लाइन 11 tells you what will be your forgiving amount, and as you can see it says pick up the smallest of them, and the smallest is the loan amount. So 53,499 जो हमको लोन मिली है वो पूरी की पूरी क्वालिफाई हो जाती है फॉरगिविंग के लिए। और इसका जो मेन क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पर बताया कि आप मेक श्योर करें कि किसी का रेट रिड्यूस ना करें, और अगर रेट रिड्यूस हुआ है तो रिस्टोर कर दें बिफोर जून 30, और अगर आपके पास में फुल टाइम इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन में कोई इशू है तो उसको आप वॉच करें और ब्रिंग इट बैक टू द लेवल ऑफ February 15 सो दैट यू क्वालिफाई फॉर 100% फॉरगिविंग। अब हम इस एप्लीकेशन के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ आ रहे हैं कि जहाँ पर हम एड्रेस करना चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। हम याद रखें कि दिस इज़ फेडरल गवर्नमेंट लोन, is from SBA, and everything you certify is very critical. So understand what you're signing off for. So the first certification you will be signing is that the dollar amount for which forgiveness is requested was used to pay costs that are eligible for forgiveness, which means कि you spent the money for exactly what you are allowed to do. ये आप make sure कर रहे हैं, उसके अंदर बता रहे हैं it includes all applicable reductions due to decreases in the number of full-time equivalent employees and salary hourly wage reduction. आप accept कर रहे हो कि जहाँ भी reduction की ज़रूरत थी आपने कर दिया है. Then you are also accepting it does not include non-payroll costs in excess of 25%, which is also a requirement. और secondly, आपने ये make sure किया है कि इसके अंदर में does not exceed 8 weeks worth of 2019 compensation for any owner, employee, or self-employed individual, general partner, capped at 15,385 per individual. This is a very interesting an important certification which particularly applies for self-employed people, and whenever you have a question on that we request you to consult, because you will not be forgiven 100% of your loan. You are only getting 8 weeks worth of compensation. You need to work on it unless there are more clarifications coming. But anyways, these are the certifications we do. Then they say that this is an important next certification where we are saying that I understand that if the funds were knowingly used for unauthorized purposes, the federal government may pursue recovery of loan amounts and or civil or criminal fraud charges. Agar aapne janbujhkar, knowingly, you took the PPP money and you used it for other purposes, then there could be criminal fraud charges. And that is why we insist, we suggest that please use a separate bank account so that there is no question about any mingling of funds. Those funds come and go for the purpose they are meant for. The next certification is that the borrower has accurately verified the payments for the eligible payroll and non-payroll costs for which the borrower is requesting forgiveness, that you have verified everything. And then you're saying that you have submitted to the lender the required documentation, which is verifying the payroll, and that is all that you have done when you have submitted the application. You should submit all the documentation for it. And then next thing you are saying is that this information provided in this application is all supporting documentation is all correct in all material respects. इसके अंदर में आप बता रहे हैं कि इफ़ नोइंगली आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर में, इसके अंदर में कोई भी इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है, तो देन देयर इज सीवियर पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर इट.
it's up to fine of $250,000 and imprisonment and a lot of charges there. So be careful and please be very specific in answering every question on this form as you understand it. Don't get pushed into answering anything because the bank wants it certain way. Insist that you want to be careful on answering the questions the way they should be answered. The next thing you are saying is the tax document, which is the 941 and other forms that you are submitting to the bank with this application are the ones that you will be submitting to the IRS or have already submitted to the IRS. And then you are saying that I understand and acknowledge and agree that SBA may request additional information for the purpose of evaluating the borrower's eligibility for the PPP loan and for loan forgiveness. अब ये part आप understand करें कि यहाँ पर SBA ने ये authority अपने हाथ में रखा है कि at this point also they can ask for more information to determine whether you were eligible for PPP or not and whether the loan forgiveness is also appropriate or not. And if you are not able to provide that information, then the SBA may determine that you are not eligible. And then finally, we need to understand what they're saying, that the borrower's eligibility for loan forgiveness will be evaluated in accordance with the PPP regulations and guidance issued by SBA through the date of this application. SBA may direct a lender to disapprove the borrower's loan forgiveness. So SBA keeps that right that they can send a notice to the lender that this borrower's loan forgiveness application cannot be accepted. Now we will look at what are the different documents that you need to submit with your application. The first thing you have to be ready to submit is your bank statement. Bank statement will be required as it is listed as one of the documents, so most banks ask for it. When you have your bank statement, make sure that you put in a good, nice bank statement, which is when you have a PPP account separately. For example, don't have other transactions in your bank statements. Avoid them so that you don't confuse the banker with what is, PPP eligible expense and what PPP eligible deposit. Next thing is we will be submitting the 941s and the state forms. It says that if your 8 weeks ends in June, then you have to submit for quarter 2. But if your 8 weeks ends after June 30th, the rules are saying that you have to submit for quarter 2 and 3, even though not submitted to the IRS. So you have to be ready with your 941 form. You have to be ready with your state unemployment tax return form. Both of those are required to be submitted with your application. If you have health insurance plan for your employees where the employer contribution is made, and if you are deducting it, then you have to submit an evidence of health insurance. You may submit an invoice from the insurance company or and also a statement from your retirement plan administrator. But make sure that this is only the employer contribution part that they are looking for. Finally, if you have mortgage interest payment, the requirement is that you have to submit a statement from February 2020. This will give them an evidence that the mortgage was there in February 2020. And then you have to give statements for all the months until the month after the end of your covered period. So if in our example, the covered period ends in June 2020, so you have to give a statement of July 2020, which of course makes it interesting that when you're applying for forgiven, are you in July already or will you be in June? That is interesting, but that's what the rule says, that you have to give for the month after the covered period. And then you have to also submit a copy of the lender amortization schedule, which will also give them an evidence of the existence of the mortgage before February 2020. If you have rent or lease payments, the requirement is that you have to submit a copy of your lease agreement.
which shows that the lease was there before February 15, 2020. And you also have to submit a copy of the canceled checks of the lease payments or the rent payment that you did. And also, if possible, get a statement from your landlord. All of these things आपके पास होंगी. आपका लीज अग्रीमेंट है, आपके कैंसल चेक्स हैं, लैंडलॉर्ड के पास स्टेटमेंट है टू गिव द एविडेंस दैट यू हैव पेड. यूटिलिटीज़ की डेफिनेशन में बता दूं कि लॉ के अंदर में इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन एंड इंटरनेट. दीज सर्विसेज जो आपके पास में अगर पहले से मौजूद थी, तो इन सर्विसेज की बिल्स, इन्वॉइसेस आपके पास होनी चाहिए. दे रिक्वायर दैट यू सबमिट द कॉपीज़ ऑफ इन्वॉइसेस फ्रॉम February 2020. तो आपको फरवरी के इन्वॉइसेस चाहिए, और इन्वॉइसेस जो भी कवर्ड पीरियड के अंदर इन 8 हफ्तों के अंदर पे हुए हैं, वो सारे के सारे आपको सबमिट करने हैं. अब हम फाइनली कुछ स्पेशल सिचुएशंस को कवर कर लेते हैं कि जिसके अंदर में अगर आपके पास में ऐसा सिचुएशन है कि आपके फुल टाइम इक्विवेलेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कवर्ड पीरियड के अंदर रिड्यूस हो गए हैं कंपेयर टू द रेफरेंस पीरियड, या आपके सैलरीज या वेजेस रिड्यूस हुई हैं मोर देन 25%, और आपके चांसेस हैं कि आपके शायद फॉरगिविंग के जो है वो 100% नहीं होगा. तो वी रिक्वेस्ट दैट यू शुड कंसल्ट योर प्रोफेशनल एडवाइज़र as soon as possible so you can get advice on what steps you can take right now to maximize your loan forgiveness. We hope this was a helpful video, and we wish you all the best to get your 100% forgiving of the Paycheck Protection Program loan.